industrial training to a hotel after joining for 6 months. They find वहाँ तो बनाए गए ऐसा सही होगा, the dream and all this thing. यहाँ तो totally opposite. So they get demotivated. But guest is there, तो वहाँ पे घड़ी पे काम नहीं हो सकता. It's not a factory. हम जूठा प्लेट उठाते हैं, हमको भी फील नहीं होता. Menu card and the QT book used to be there. No computerized in that. Yes. And the position was assigned. So I have taken a decision to motivate all the young hoteliers. So I would like to take your. So guys, good afternoon. आज मेरे लिए बहुत लकी दिन है बिकॉज आई एम मीटिंग द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन मीटिंग द जनरल मैनेजर ऑफ होटल मौर्या मिस्टर BD सिंह. और सर ने बहुत अपने बिजी शेड्यूल में आज टाइम दिया है टू विल हैव सम डिस्कशन. इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू, विल जस्ट हैव अ डिस्कशन अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री और व्हाट ही वांट्स टू एडवाइस द फ्यूचर होटेलियर्स. तो सर a lot of thanks कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में मेरे को टाइम दिया. तो विल जस्ट हैव अ शॉर्ट डिस्कशन. इफ यू वांट टू स्टार्ट से समथिंग फॉर द बिगनिंग. It's good to hear all this about this Anand Mishra. He has worked under me, and and he was very dynamic voice, and he has gone to abroad, and after that he has come back to India, and I'm happy to say him he's doing something new for this hoteliers. And just so after seeing this, maybe there will be new young boys who's going to join the hotel industry, so they'll be motivated. So first question which I want to ask you, sir, कि today's generation wants to be successful very quickly. मतलब they want to have everything. From the first day they want to have a lakh rupee salary. From the first day they want to have good accommodation and stuff. So what advice you want to give to the young hoteliers? See, the hotel industry is a service industry. We are selling a service. So these are two differences in the hotel industry. So when you sell the product, and you sell the service, very difficult when you are selling a service to be selling a service. And they join the hotel industry. I asked them, why did you go for the hotel industry? You should have a passion. It's a very hard working, but of course it has to be a passion. In a hotel industry, one principle हम लोग काम करते हैं कि अतिथि देवो भव. जब तक ये भावना नहीं रहेगा, we cannot. Although दो अंतर है कि इसमें लोग पैसा दे के अतिथि सेवा हम लोग देते हैं, पैसा पे करते हैं उसके बाद में, बट ये फीलिंग हो रही है, पैशनेट होना है, उसको जॉब को एंजॉय करना है. ये बात को जब तक उनके अंदर में नहीं आएगा तब तक और भी कि हमको गेस्ट को एक खुशी होती है किसी को कि हम उनको सर्विस दिए, खाना सर्व किए, खाना शेफ हमारे खाना बनाए उस तरह के, और वो खुश होते हैं तो एक अलग से उसकी इनर फीलिंग आती है. ये हमारे जब वही लड़का सक्सेस हो पाता है. नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि हमको इतना हार्ड वर्किंग करते हैं तो क्या मिलता है इन लीव ऑफ दैट. तो दोनों का है. एक इसकी प्लस पॉइंट हम देखते हैं, इसमें एक बहुत से इंट्रैक्शन होता है. आप यू आर मीटिंग विद डिफरेंट पीपल, बहुत सा लाइजनिंग होता है कि यू डोंट नो, कल आप सोच नहीं सकता कोई कि भाई उनसे हम मिले हुए थे. एक अलग वो सेटिस्फैक्शन होता है. इस इंडस्ट्री में एक प्लस पॉइंट ये सबसे बड़ा है. आप किसी स्टार से, किसी से लगता है लोग सोचते हैं भाई दूर से देखते हैं, यहाँ आपको लगता है कि यू हैव सर्व्ड टू देम. इतनी इंट्रैक्शन में क्लोज, उसके लिए करके बहुत बड़ी ये मतलब ये प्लेटफॉर्म मिलता है. अचीवमेंट है. और सेकेंडली जहाँ तक जो लड़के लोग को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, दे शुड हैव अ पेशेंस. और हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी घड़ी देख करके हम लोग भी आज पहुँचे हैं इस लेवल पर, वी नेवर सीन द वॉच, कि हम लोग करते पर ड्यूटी नहीं करते हैं कि भाई गेस्ट इज टिल द गेस्ट इज देयर, तो वहाँ पे घड़ी पे काम नहीं हो सकता. इट्स नॉट अ फैक्ट्री. कि फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ बना चोंगा बना आउट. वी कैन नॉट दिस. टिल द गेस्ट इज देयर यू हैव टू बी देयर. तो यहाँ पर टाइम दे करके हो नहीं सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सोचना होगा कि भाई होटल इंडस्ट्री में जाने के बाद टाइम, जब तक गेस्ट हैं तब तक आप है, वहाँ तक जब तक गेस्ट हैं तब तक हम लोग हैं. बात उन्हीं में माने आपकी मेन मोटो होगा कि एक सेटिस्फैक्शन होता है कि भाई जो गेस्ट हमारे होटल में आए हैं तो हम उसके अतिथि जैसे अपने घर में मेहमान आता है उनको वहाँ तक हम सी ऑफ कर देते हैं. तो उस तरह का ही चीज़ यहाँ भी होटल में भी होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे अतिथि देवो भव, यही हम लोग का एक अलग फिल्म जिनमें आ जाएगा. तो उसका कोई नहीं होता कि हम जूठा प्लेट उठाते हैं, हमको भी फील नहीं होता. आज हमको लगता है कि अपने घर में जैसे उसमें खुशी होता है ना, दूसरे को नहीं बोलते हैं, अपने से हम कर देते हैं, सब अपने से होता है. तो एक अलग एक फीलिंग आती है. ये फीलिंग के साथ ही कोई होगा वही सक्सेस कर सकता है. बिल्कुल. So this was a great thing discussed by sir. The second question, sir, कि I was having a discussion with you and you said that initially only you told me कि army is considered to be similar to hotel industry. Correct. So see, it's a very discipline and punctuality is very difficult. We both are like nowadays it will be lacking. Nowadays lacking even in hotel institutes.
that whether they are giving the people are just going for this. Only I needed some degree. Earlier, what happens with the training was they're like army training. The discipline normally earlier used to have a menu card and the QT book used to be there, no computerized in that, Yes. and the position was assigned. You don't have to move with the guest is coming from that side. So we are make them sit. We are pulling the chairs. We are giving that. So now this is lacking here when we find this young boys are coming. So they are chatting with each other. They are not Unprofessional. unprofessional. It was not like that. But my suggestion with the young boys to be disciplined like army. If you go to they have been assigned the positions whether the guest is there or not. They have their concept like so. एक वो feeling professionalism की थोड़ी सी lacking is there. सर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं दे ऑल वांट टू बी द जनरल मैनेजर ऑफ द होटल फ्रॉम द फर्स्ट डे दे जॉइन द इंस्टीट्यूट नाउ यू आर द जनरल मैनेजर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम तो सर व्हाट क्वालिटीज यू सी इन अ बॉय की ओके आई सी हिम एज अ फ्यूचर जनरल मैनेजर व्हाट क्वालिटीज यू फाइंड इन अ स्टूडेंट See, first of all, we say take that the boy can take responsibility. First, responsibility is taken, not given. यस The boys, what happens? We as a management, we observe that this boy has a potential without saying. Even I normally what happens? If somebody has a talent, they don't expose. बोलो नहीं it's not. कल हम बोलेंगे तो हमको फिर ये भी काम मेरे को मिल जाएगा. ये सबसे बड़ा एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जानता है ही कैन डू दिस बोल अपना नहीं करना चाहता कि लगेगा फिर हमारे इतना ही तनख्वाह मिलता है इसी में फिर वही काम हमको करना पड़ जाएगा ये रॉन्ग है एक ये सबसे बड़ा वहाँ तनख्वाह से नहीं देखा जाता है वो होगा कि मैनेजमेंट के नज़र में आप ये भी जानते हैं ये भी स्किल है आपके ऊपर में तो उसकी एक अलग पैरामीटर एंगल्स में तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कर दिया जाता है तो आप जिस तरह से बोलें कि लड़का जो जनरल मैनेजर की जो करता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा एक बहुत बड़ी चीज होती है ये नहीं उसे पैसे से क्या सैलरी मिलता है उसको नहीं देखा जाता है उसको यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया मैनेजमेंट सोचा कि नहीं इस लड़के में है कि ही कैन डू इट तभी मैनेजमेंट को जिम्मेदारी देती है और उसके ऊपर निर्भर करता है उससे पैसे से उसको सैलरी सेलिंग नहीं करता है अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे लड़के कुछ लड़कियां जो भी अपने एम्प्लॉय को वो छोड़ना नहीं चाहता है एक को फैमिली और प्रोफेसर एसोसिएट्स हो जाता है बिकॉज उसके चलते हुआ तो कोई भी नहीं तो आप बॉदर मत करो कोई भी जब आदमी होता है कि सैलरी पार्ट तो मैनेजमेंट का है हाँ समटाइम्स होता है कि कंपेरिजन होता है स्टाफ में और एक डिमोटिवेशन होता है फिर दे कंपेयर ईच अदर हम इतना काम करते हैं तो मेरे को यही सैलरी मिलती है वो करते हैं बट उसको एक और भी खुशी होनी चाहिए कि मैनेजमेंट मेरे को सोचा कि हम ये हो सकता तो वो शी कैन ग्रो वो सोचे कि रिसोर्ट मिला है तो हम इसको किस तरह से बखूबी हम निखार पैदा करें तो इसके होने के बाद में ही और शी कैन बी अ जनरल मैनेजर सर एक और क्वेश्चन विच पीपल कीप और आस्किंग मी टू बिकम अ जनरल मैनेजर इज वेरी डिफिकल्ट but to hold the position of general manager also needs a lot of difficulty because you yourself must be dealing with a lot of things because you are the boss of all the departments so aapko as a general manager what difficulties you face and how do you overcome it see we have so many departments all of the HODs are there so through them we of course all the resources comes under the number whatever happens ultimately I'm answerable to that okay so when sometimes situation comes out but happily we have to accept sometimes we take a bigger party some VIP party to be bothered that hey, it's a prestige of the organization or prestige of the state suppose little bit pain you have to take for that okay and that people carry these good impressions so that was my suggestion I always motivate I tell them my HOD all the my employee it's not a Moria maybe it's a building okay but it's you it's individual or a Moria we don't know even the downline people is the prestige of any organization it depends on the downline people because his interaction with the guest absolutely how he is interacting how is he replying what he is telling and that they carry the guest carry that impression about these organizations so that is the basically we emphasize on the downline who is interacting with the guest it prestige of this organization in his or her hand absolutely how he is behaving with my guest I don't know I'm not interacting with the guest normally he's going to serve he's the face of the hotel he's the face of the he's interacting with the guest how he's talking how he's replying so always it is the one thing is your attitude my suggestions always is the be positive attitude never say no or try to say everything is possible guest comes to enjoyment the guest doesn't want to see your long face whatever you have problem
keep it your house. So when you come, because of your smile is included in the price. Absolutely. It's not that people are paying for this chicken, but some of the aloo dum that much. Okay, and we are saying the ambience, atmosphere, environment. So that has to be considered for my suggestions of these young boys. That they should have a patience to make them feel. Ultimately, because of some of the guests comes up because of the particular person. So depend on that, and it long way it will pay for it. It's not a question today. Repeat business. Today maybe it will be lagged by the some person CEO of the company. Maybe it will be picked up. Maybe some of hoteliers come to the staying. Maybe he can make a generous property. So always will pay. Right. One more question which I want to ask you personally, because I have been seeing you for a very long time. I have started with you only. I always see yourself full of motivation, and whenever and wherever I've worked, I've always discussed your face that if you guys are not lucky that you guys have not got a leader like Mr. BD Singh. He used to train us like this. So how do you as a person keep yourself motivated? Because you're loaded with works. You have to run such a big organization. You're always under pressure, but still you keep on smiling and you keep on training new people like us. I always I see that when this service, my guest is smiles. Always I try to whoever comes, they go with a smile. That is my idea. I feel because of when my guest is a smiles when they satisfy with his our services, and that motivates me. The guest a smile and satisfaction motivates me. Right. Last question I want to ask, because I know you are busy. I won't take a long time of yours. The last. I'll give you an example. Like Anand Mishra, I recall that when we were going to the Bhutan. Yes. And he was with me. He was just young over there. So he joined that. Then he was going, and I took him to get a new exposure. Start to the Taj Tasi Hotel in Bhutan. Yes. In 2011 or 2011, and he was a person who was going we are going on this we are going by the road, I believe, yes. And we get down, and he has a very what I wanted to say about him, he's a positive attitude man. Why? He wanted to learn. Even I give a tips, and he used to accept this one. Okay, why this one? So that was basically I found it, and he has proved that because of that he has gone abroad, and he has in very short time he has got some more exposure. Yes, thank you very much for appreciating. So it means a lot to me. Last question I want to say, sir. Today's young generation, they are very demotivated. They are leaving hotel industry because I have seen all across, and they feel that this industry is not good to build a career. So I have taken a decision to motivate all the young hoteliers. So I would like to take your honorable experience. What suggestion you want to give to the young hotelier who have just taken admission in the college and they want to do something for this industry? What suggestion you want to give? So when they normally what happens, they don't see the real picture before joining in the hotel industry. When join the hotel industry, they come to like somebody, they come for the industrial training to the hotel after joining for 6 months. They find वहाँ तो बनाए गए ऐसा सही होगा, the dream and all these things. यहाँ तो totally opposite. So they get demotivated. But what happens with long way में, again I tell you, it is totally a different industry. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसी में है कि भाई आप मे बी यू कैन अर्न, यहाँ पे है कि आपको एक इंट्रैक्शन और किसी से आपको जो पर्सनैलिटी से मिलने का है वो पैसा दे के भी आप नहीं मिल सकता है. तो ये भी एक सर्टिफाई होगा होम इंट्रैक्शन उसके लेकर देखते हो लाइन में लोग खड़े रहते हैं और आप उससे 1-to-1 में बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर के चलो भाई क्या क्रिकेट अपॉर्चुनिटी. तो बहुत सारे लड़के लोग इसके चलते भी आते हैं कि ऐसे गुड पर्सनालिटी कोई फिल्मी से कोई पोलिटिशियन मैंने जिनको भी एक खुश से मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है इस इंडस्ट्री में. पर्सनालिटी ग्रोथ. एंड सेकेंडली एक अलग इसकी जो यंग बॉयज को क्या है कि वो लोग कभी सोचते हैं हाँ सैलरी जहाँ तक है कि इस इंडस्ट्री में सैलरी का जो है कि कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्री वो कम है, ठीक है, बट स्टार्टिंग कम है, बट उसके लेकर के एक अपॉर्चुनिटी होगा कि यू कैन बी ओन एंटरप्रेन्योर. यदि रियल आप करना चाहते हो तो आप एक्सपोजर करके खुद की अपनी रेस्टोरेंट खोल सकते हो. आपको ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ से मिलने के बाद ना रियली हम सीख लिए अपने को ये आपको योर ओन एक सबसे बड़ी आप ये चीज को खुद का मिलता है कि भाई टुडे हाँ सिंसियर आई हैव टू लर्न कि व्हाट इज योर SOP, हाउ दिस होटल्स or restaurant operates. Or six liya, then you can open your own restaurant, you can your hotels, you can so that's what advantage you'll get it here. And sincerely, some students follow that. Absolutely. So as you have seen Mr. Singh speaking about everything, so I would just request all the people who are frustrated about this industry, please come and join this industry. This industry is nothing less than the other industries. So I hope
this video is going to be a game changer for a lot of you, because a lot of you will get motivated, because I have been motivated by him. I started with him, and whatever I have done in my life so far, it is just his blessing, and will need your blessings in the future. Always whoever the hoteliers or the young boys who join to the hotel or those who have been working. First, my blessings are that don't get deprived. Okay, keep patience. Always there. We have so many opportunities in the hotel industries. Earlier, even the corporate sectors now they are taking the hotel management guy, because of their now all this booking and all done by the hospitality manager. So every corporate, even earlier it was not only the people who are joining in the hotel, but now even corporate houses, all the booking has been outsourced. Other people, even the hospitality hotel management guys are doing that. They are managing with all these big corporates. So lots of scope is there, lots of opportunity you can, और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके खुद की आप एक बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो. ये सबसे बड़ी है कि आप हो गया कि डोंट लाइक दैट, तो अपना कुछ भी कैपिटल, क्योंकि आपके पास एक कैपिटल हो गया, खुद के एक्सपीरियंस आप जान गए हैं, तो आप इसको चाहत करके आप अपना खाना बनाने में मान लो जान गए, तो एक यहाँ पर लगा करके थोड़ा सा पूंजी करके खुद बना के अपना कर सकते हो. यू कैन मैंने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलता है. लोग अभी सोच रहे, देखो पहले में आपके देखे कि सब पहले होता था, लोग उसको एक दृष्टि से देखा जाता था, लोग बोलते थे और चीज. आज हम लोग स्टूवर्ड बोलते, पहले उसको वेटर बोलता था लोग, अब ग्रेजुअल चेंज होगा, वेटर नहीं कोई बोलते, स्टूवर्ड. कैप्टन होता था, कैप्टन उसकी कैप्टन की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है जो होटल इंडस्ट्री में, और कप्तानी किए हैं, मतलब एक शिप का. और नाउ मैनेजमेंट एक शिप होता है, जैसे रेस्टोरेंट को इंचार्ज होता है, उसका कप्तान, उसके ऊपर है पूरी शिप को ले जाना, चाहे सिंक कर दे या करे. तो जिम्मेदारियां हैं और अपॉर्चुनिटी है, और सेकेंडली इसमें ग्रो का बहुत स्कोप है कि खुद का एक अपना रेस्टोरेंट का मालिक बन सकते हैं. You guys are future businessmen in making, so don't get demotivated, and please do come and join this industry. So thank you very much. Thank you. अपना टाइम देने के लिए. Thank you. Take care, sir.